Phagocytosis, that is cell drinking, उसमें क्या होगा? The water molecule or those substances which are completely dissolved in water, that will come here and it will make a contact with the cell membrane. So by the contact, it forms a depression, infoldings, just with the contact of those molecules, water or dissolved substances. No any particular substances is there in pinocytosis. So this infoldings increases, and what happens that it forms a vesicle-like substance. है ना, ये vesicles बना रहे हैं आप, having the water or dissolved substances, and ultimately it gets pinched off, pinching हो जाएगा उसको. Okay, so two processes: formation of these vesicular vesicles, then pinching of those vesicle substances. So this is the indentation, that is infoldings or indentation. Just by touching that area, it is indenting that area, and that indentation increases with time. Okay, and ultimately it forms a vesicular substance, vesicles बनाते हैं, and that gets detached from the cell membrane, and it goes on. इस तरह से ये क्या होता है? It is called constitutive endocytosis. मतलब continuously होते रहते हैं. Okay, this occur continuously, इसलिए constitutive कहते हैं. Pinocytosis. Then there is, this is pinocytosis. Then there is phagocytosis. When there is any particular substance, solid particles है, like bacteria आ गया, dead or fungi or virus or any other foreign particles, what will happen that there will be a formation of, like macrophages, and they do phagocytosis, cell eating. Neutrophils, they do phagocytosis. What they do, they sense projection around that particular substance, projections देते हैं, and it captures that bacteria or any particular substance, and it surrounds that bacteria, and after surrounding, it is a particular substance, थोड़ा सा भारी होगा, a little bit heavier, so it needs to be dragged inside. So for dragging, it stimulates the actin molecule. अंदर में होते हैं, cytoskeleton, molecular motors are there, so it drags that vesicles which is having this particular substance, and ultimately it brings inside, and there are hydrolases, within the lysosomes, वो इस पे एक्ट करेगा, ठीक है, phagolysosome बनाएगा, and ultimately that will be degraded. Okay, so this is the phagocytosis. Then coming on to the receptor mediated endocytosis, there is involvement of some receptors in those areas. There is involvement of some receptors over it, like there are some substances which are only taken in if there is presence of those receptors in that area, like some lipoproteins. Okay, LDL proteins होते हैं, especially in the hepatic cells. What happens that those substances which comes here, they are having those receptors for it. जैसे LDL molecule आया तो LDL के लिए receptor होगा, LDL receptors. Okay, and whenever this substance attaches with the receptor, respective receptor, what happens that it activates. Inside में क्या होते हैं, सेल के inside में there are clathrin molecule, है ना, इसके जहाँ पे ये receptors होंगे उसके पीछे में क्या होते हैं, there are lined fibrillar receptor molecules, fibrillar proteins called clathrin molecules. They are tri-skeleton, तीन इस तरह से होता है, okay, with a hub inside. So whenever it attaches with the receptor, it gets activated. ठीक है, जैसे activate होगा, it क्या होता है, it makes a depression, that is called clathrin pits, clathrin coated pits. Okay, इस तरह से ये indentation increase होता जाएगा, it will pull inside,
and ultimately it will surround, and then it will detach. For detachment there are protein called dynamine, वो detach करते, okay, detach कर के उसको अंदर लेके आते हैं, and ultimately there are hydrolases within the lysosome that will act over it. They are molecular cutters, है ना, वो कट कर देते हैं. So this clathrin molecule will be back and other substances will be digested. ठीक है. So this is about the receptor mediated endocytosis. These are LDL receptors, these are LDL. So this is receptor mediated endocytosis. Then there are exocytosis. Exocytosis में क्या होता है? You know, their cells are synthesizing a lot of hormones, neurotransmitters, or even there are different like excretory products, you know. Okay, so that has to be extruded out. वो बाहर जाना है, उसके लिए क्या करते हैं? It utilizes this process, that is exocytosis. You know, suppose like insulin substances which has been synthesized in the beta cells. Okay, so that has to be released from that cell. So what happens that these substances which have been formed within the cell, they are within a membrane bound vesicles. अंदर में होते हैं vesicles के form में, अंदर में substance बनाया है ना, that has to be released. So what happens that whenever this has to be ये exocytosis process initiate होने के लिए, what happens that there is a influx of calcium ion. Calcium ion के influx होने से क्या होता है? These vesicles and the membranes, they try to attach with itself. एक दूसरे की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना, especially this one, ये इधर जाना शुरू हो जाएगा, है ना. Whenever there is influx of calcium ion, calcium mediated transportation of these vesicles to the cell membrane, and there is a docking in the cell membrane. Docking means piercing, okay, and in that way it is being released. So we will see pinocytosis, as we have discussed, that is cell drinking, process in which the liquid substances are taken inside. Okay, you can see here, liquid substances are taken inside. The reabsorption by renal tubular epithelial cells merely by just infolding of the cell membrane, just it is attaching and making an infolding and indentation. Then phagocytosis, that is cell eating, engulfing of the solid particles like bacteria, dead tissue, other foreign tissues. The steps, attachment होगा उसमें, then engulfment and then degradation. Okay, जैसे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स करते हैं, अटैच होते हैं, engulf करते हैं, then degrade करते हैं, isn't it? Then receptor mediated endocytosis, that is also called podocytosis. There is involvement of a special receptor protein for the transportation, and that receptor is present on the cell membrane. Okay, and that receptor protein is then activated, and that is after that that substance is taken inside. You can see here, this is the receptor molecule, these are the coat protein, that is the clathrin protein, and this is all, for dragging there is also involvement of actin also here. Actin भी यहाँ पे involved होता है drag करने के लिए, along with clathrin molecule, है ना, receptor mediated endocytosis. Example is transport of iron, cholesterol. Example is important. Receptor mediated endocytosis, transport of iron, cholesterol in the form of LDL, then growth factors, then different vitamins also. Okay, so these are the example of receptor mediated endocytosis. This endocytotic process is broadly divided into two types. Mechanism: constitutive, that is being done continuously, है ना, ये होते ही रहता है, that is endocytotic vesicle is formed and that is getting detached. Vesicle बन रहा है और detach हो रहा है. Then clathrin molecule,
कैन सी हियर दिस इज द क्लेथरिन मॉलिक्यूल, है ना, ये रिसेप्टर है ऊपर में, ये इसके अंदर में क्लेथरिन है, दिस वन, दिस इज द टू बाइलिपिड लेयर, दिस इज द क्लेथरिन मॉलिक्यूल। जैसे ही अटैच होता है इट गेट्स एक्टिवेटेड, है ना, जैसे एक्टिवेट होता है ये डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है एंड इट सराउंड्स दैट substance, okay, and then it is pulled up with the help of actin also, and this क्लेथरिन molecule ये वापस चला जाता है, यहाँ पे फिर से वापस से रिसाइकिल हो जाए। Now exocytosis is a calcium dependent process, है ना, this may be asked in MCQs. It is a calcium dependent when the cellular contents are moved out of the cell in the form of vesicles. इसको cell vomiting कहते हैं exocytosis को, like exocytosis of hormone, neurotransmitters, and what are the proteins which are involved in exocytosis? Endocytosis में तो हमने पढ़ लिया, क्लेथरिन है, डायनामिन है, कैबिलिन है, okay, मिगेलिन है। Then there are also proteins which are involved in exocytosis. ये आप पढ़ोगे neuromuscular transmission में, you will come across synaptobrabin and syntaxin. वो दोनों प्रोटीन क्या है, एक्सोसाइटोसिस में होता है एंड उसको हम कहते हैं एस्नेयर प्रोटीन। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इसमें और सारे प्रोटीन आते हैं। स्नेयर प्रोटीन, एस फॉर सॉल्युबल, आर ई लास्ट में रिसेप्टर है, ओके, सॉल्युबल रिसेप्टर, ए बीच में क्या है, एक्टिवेटिंग प्रोटीन, एन इज फॉर एन इथाइल मैलिमाइड सेंसिटिव फैक्टर। इसके अंदर में आते हैं बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, okay, there are synaptobrabin, there are syntaxin, okay, ये सब इसमें आते हैं। Those snare proteins are mainly, or these proteins are for exocytosis, okay, like you know neuromuscular transmission में neurotransmitter involved is acetylcholine, so the release of that neurotransmitter from the vesicles, it is mediated by these snare proteins, है ना। snare proteins vesicles को क्या करना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज करते ही उसके तरफ लेके जाते हैं, ओके। कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द snare protein, दिस इज द वेसिकल, इसके ऊपर वो प्रोटीन होते हैं, सेल सरफेस पे होते हैं। आई जो आपका आप पढ़ोगे न्यूरोमैस्कुलर ट्रांसमिशन में, this is the cleft area and this is the pre-synaptic membrane area. तो इसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन होते हैं, इसके वेसिकल्स के सरफेस के ऊपर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके, लाइक सिनेप्टोब्रेबिन एंड सिंटैक्स, है ना। ये दोनों नहीं रहेगा तो ये वेसिकल फ्यूजन नहीं होगा, एंड फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, रिलीज विल नॉट बी आकर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होगा, isn't it? So there are other SNAP25 also, synaptotagmin also, so these are all snare proteins. Then broadly two pathways of exocytosis, that is constitutive and non-constitutive. A constitutive means continuously हो रहा है वो, जैसे हमने देखा था इंडोसाइटोसिस हो रहा था, है ना, continuously vesicles बन रहे हैं और detach हो रहे हैं, like that there it also occurs in a constitutive way, that is prompt continuous transport of proteins, अंदर में प्रोटीन बन रहे हैं इस तरह से, ये वाला इधर, this is the constitutive pathway, and non-constitutive pathway is also occurs, but it requires a signal molecule, कोई बाहर से सिग्नल आएगा तभी ये रिलीज होगा, that is non-constitutive, okay, exocytosis. So constitutive is prompt continuous transport of those proteins to the cell membrane in the form of vesicles, है ना। इधर से you know these are the Golgi apparatus, है ना, Golgi से आ रहे हैं, इधर से बनते हुए प्रोटीन्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स को बाहर जाना है ना, ये बर्डिंग हो रहा है, बर्डिंग से ये बाहर निकल रहे, कंटिन्यू, दिस इज अनरेगुलेटेड, unregulated membrane fusion, and this is the regulated one. Whenever there is signal like hormone or any neurotransmission, then the signal will travel inside, there will be signal transduction, and then this will be activated. So it is a regulated exocytosis.
non-constitutive proteins from the Golgi apparatus. They are stored in the vesicles. They release the content in response to a specific stimulus. That is non-constitutive exocytosis. Okay? Then transcytosis, this is also called cytopemasis. 3 steps, इसमें वेसिकल बनेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, एंड देयर विल बी डॉकिंग. डॉकिंग मीन्स पियर्सिंग, है ना, एक जगह से जाएगा दूसरे सेल के अंदर ही में. एक क्या रहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाना है, गोल्गी में जाना है ना, तो क्या करना है, इस तरह से फॉर्म में जाएंगे वेसिकल्स के फॉर्म में, और वहां जाके डॉक कर जाएंगे, है ना. होते हैं ना प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी में जाते हैं वहां प्रोसेसिंग होने के लिए. सो देयर इज ट्रांससाइटोसिस. Then there are other forms of transport also. बताया था आपको, if it is through the cell में आपका ट्रांससेलुलर, अगर सेल को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, है ना, बीच से ही जा रहे हैं, that is transcellular pathway. Then there are also paracellular pathway. This is paracellular, in between the cells, है ना, through the tight junctions, बीच में tight junctions है. And these tight junctions are not tight for the water. There are some areas where tight junctions are present, but they are not tight enough for water. Okay, so this is called, अगर बीच से हो रहा है through the tight junction, that is paracellular, बीच से जा रहा है. And if it is crossing the cell, then it is कौन सा हो गया, that is transcellular. बोलो transcellular. ये आपको आगे मिलेगा सब रीनल फिजियोलॉजी. देयर आर ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, बॉमन्स कैप्सूल में पढ़ा होगा ना, वहां पे अल्ट्राफिल्ट्रेट आते हैं. दैट इज जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको फिल्टर नहीं करते, लाइक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन डिवॉइड होता है फिल्ट्रेट, so that is ultrafiltration. Another term of transport you can understand. Filtration through a medium which allows water and low molecular weight substances, but not the high molecular weight substances like proteins and other. It holds back those solids. Bowman's capsule, you know, this is an example of ultrafiltrate. That's all about transport mechanism. The few MCQs are there, you must be knowing this. Facilitated diffusion के लिए कौन सा true है? अटेंडेंस पास कर दिया आपने? Which one is correct? It requires energy or not? Tell me yes or no. It not. Movement against concentration gradient? No, it is along the concentration gradient. Movement along the concentration gradient? It is correct. Requires carrier protein? This is also correct. Follows saturation kinetics? Yes. So these three are, last three are correct. Then fixed law of diffusion, which is true. Active diffusion against concentration gradient. बोलो. Active diffusion के लिए. Passive diffusion long concentration gradient. Yes or no? Second one correct? Yes, second one is correct. Passive diffusion simple diffusion में होता नहीं है, along the concentration gradient. About sodium potassium pump, which is correct? Heterodimer is correct, but it is homogeneous or heterogeneous? Yes, heterogeneous. वो heterodimer भी है, heterogeneous भी है. Okay. Glucose is co-transported with sodium ions. अभी बताया था ना? Secondary active transport. Glucose is secondary active transport. Phagocytosis, it is calcium. है ना? Now we will start with the body fluids. So you know the different units होते हैं ना, अल्फा सब यूनिट का स्ट्रक्चर अलग है ना, इट इज डिफरेंट, स्ट्रक्चरली डिफरेंट. So introduction of the body fluids, you know, the obviously you know our body is having composed of approximately 60 to 70% of water, so it has to be maintained.
For that there are regulatory substances, there are regulations within the cells. So that is maintenance of homeostasis is mandatory. So maintenance of relatively constant volume and composition of the body fluid, it is essential to have the body in good health, isn't it? हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए बॉडी फ्लूइड. सो व्हेनेवर यू नो देयर डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो जाता है, यू नीड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इजंट इट? अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो उसके लिए भी क्या है, हमें क्या होता है, फ्लूइड को एक्सक्रीट कराना होता है. सो these are important from the point of homeostasis. So appropriate fluid replacement in dehydration and removal in case of overhydration. Okay, and or hypervolemia. You must have know about the term edema. Edema is swelling, within the fluid accumulation within the interstitial space. So these all required the treatment. Okay, these are all the fluid volume disorders. So to have the fluid volume is mandatory. Maintain that fluid volume. So what is the composition? In an adult, 70 kg adult, the water constitutes approximately 60%. After that, ये हमने पहले फर्स्ट क्लास में भी देखा था, I think. Then protein is 18%. After that, fat is 15% and minerals, rest of the amount 7%. So majority is having water. After that, these are non-water molecules, proteins, fats and minerals, and their percentage may vary depending upon the age or gender, okay, or it may depend upon obesity. Subject अगर ज़्यादा obese है, ज़्यादा fatty है, okay, so water content कम हो जाएगा obviously. Fat molecules अगर ज़्यादा है तो usually it is inversely proportional to age. जैसे एज बढ़ता जाता है आपका तो वाटर कंटेंट कम होता जाता है. तो बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, approximately 70 to 75% in case of infants and children. So you can see here different age groups में, you can see जैसे एज बढ़ रहा है आपका, you can see the body water percentage is decreasing. 70% approximately infants में, it has decreased up to 50%. So it is decreasing with age in both male and female, and also in case of female it is slightly lower value, approximately 10% lower. Why is it so? Because of more subcutaneous fat within it. Females में subcutaneous fat थोड़ा ज़्यादा होता है. So the total body water is about 60%. Adult females में it is approximately 10% less and 10% more in case of infants. 60% हो गया adults में, 10% कम हो गया females में, so 10% more in case of neonates and children. Okay, so why it is? She has told that it is because greater amount of subcutaneous fat, adipose tissue in case of female, and in case of premature and newborn babies it is 10% higher. But you know that dehydration is very common in children and it is very rapid. छोटे बच्चों में अगर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग होने लगे बहुत जल्दी डिटरेट कर जाते हैं. छोटे बच्चे जो होते हैं अगर डिहाइड्रेशन होना होता है तो बहुत जल्दी डिटरेशन हो जाता है. व्हाई इज इट सो? एडल्ट में विथस्टैंड कर लेता है फिर टू एक्सटेंड. व्हाई इज इट सो? व्हाट इज द काउज? बिकॉज दो द ECF कंटेंट इज हायर, 70% है, बट इन रेस्पेक्ट टू बॉडी वेट के हिसाब से कम हो जाता है. हमारे पास ज्यादा है ना, अगर लीटर में देखो उसको कन्वर्ट करते हैं तो टोटल नेट बॉडी वाटर इज मोर इन एडल्ट देन इन चिल्ड्रन. बच्चों में तो कम होगा, छोटा है, isn't it? So net amount of water is less. Though the ECF concentration 70% ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा है, but net content is less, and also the regulatory mechanisms are not very well developed. हमारे बॉडी में क्या होता है,
फ्लूइड लॉस होने लगता है तो हमारे बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और फ्लूइड कंजर्व करने लगता है ना, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग एडीएच. ओके, इजंट इट? So it is having more developed, our body is having more developed regulatory mechanism, but in case of children it is less developed. So that's why it is more common and rapid in children. It is less in case of elderly, we have discussed, than the adult counterpart. So the total body water is 60%. As we have discussed, it is 60% in water. So in case of 70 kg adult male, what will be the total amount of water? 60% को 70 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 70 multiplied by है ना 60 upon 100, that will come out to be 42 liters. So net volume of water in our body is 42 liters. So where they are located, what are the compartments? You know, there are intercellular compartment, there are extracellular compartment, होते हैं ना? So which one is having more amount of water, intracellular or extracellular? Intracellular. It is approximately 2/3 of this content is within the ICF compartment. ICF है, ECF है ना? ICF में कितना है हमारा? 2/3, 40%, 60% में 2/3 यही हो जाता है. That is 40% of body weight. Body weight का 40% हो जाए तो कितना हो जाएगा? 40 multiplied by 70 है ना, divided by 100, that will come out to be 28 liters है ना, 28 liter and 2/3 of body water. Total body water is 60% है ना, तो उसका कितना है? 2/3 इसमें, 40% हो गया तो 2/3 ही हो गया, 67%, isn't it? Are you able to understand ना? Then ECF component ये कितना होगा? रेस्ट 20%, तो ये तो 28 लीटर हो गया. 20% is multiplied by 70 divided by 100, that will be 14 लीटर. एंड 60 से 2/3 यहाँ पे था, 1/3 यहाँ पे. 40% है, 20%, that is 1/3. And that ECF component is further divided, you know, there are interstitial compartment है ना, interstitial space, वहाँ पे भी फ्लूइड होता है, प्लाज्मा में भी फ्लूइड होता है. These are all comes under ECF. ECF में further components होते हैं. Plasma is also part of the ECF environment, extracellular fluid. ठीक है? So plasma constitutes 5% of the total body weight, 5% only. Plasma and interstitial fluid. Plasma होता है, and then there is interstitial fluid, and there are other minor compartments called transcellular fluid. Then there are mesenchymal tissue fluid. These are other compartments. So plasma constitutes approximately 5% of the body weight. 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देख सकते हैं. It will come exactly 3.5 liters है ना, 3.5 liters. और you can say कितना 20% जो ECF environment है उसका कितना है? It is 25%, isn't it? 25% is this one, plasma, and rest amount, that is 15% of the body weight. 5% था, 20% को divide करना है, 5 इसने ले लिया, rest 15% is interstitial fluid, transcellular fluid and mesenchymal fluid. Majority is of the interstitial fluid, majority. These are very minor compartments. Okay, and this will come out to be 10.5%, 10.5 liters, sorry. And कितना परसेंटेज ECF का कितना हो गया? This is 25%, 5% है ना, 20% का 5% तो 25% हुआ, and this is 75%. Is it clear? So these are the very basics. Everyone must understand. Then total body water in ECF and ICF in a 70 kg male. Same चीज उसी को बता रहा है. 60% total body water हो गया, 20% is the ECF and ICF is 2/3, 40%. Then percentage of body water, that is
ये 100 अगर ले रहे हैं इसको तो 1/3 is ECF, 2/3 is ICF. This is come out to be 42 liter, 14 liter and 28 liter. ठीक है? Then you know these are the compartments which have been shown. This is the ICF environment, 28 liter. Then this is the ECF environment, that is 14 liter. ठीक है? And ECF में you know there are compartments called interstitial fluid. There are other minor compartments also, transcellular, mesenchymal fluid. And ये क्या होगा, ECF environment और ICF environment सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है. सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, एक बाहर में. And in the ECF there are interstitial fluid compartments, and within the plasma, है ना, जो कैपिलरीज है उसमें तो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा भी है. So that plasma and the interstitial fluid they are separated by that capillary membrane. में कैपिलरी जो जा रहा है, जो ब्लड है, ब्लड के बाहर है ना, तो इट इज सेपरेटेड बाय कैपिलरी मेम्ब्रेन. दे आर इन डायनेमिक एक्शन, एक दूसरे से मूव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच अदर अपार्ट फ्रॉम हायर, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस. सो यू नो इट हैज टू बी रेगुलेटेड. ये इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड. फर्स्ट डे, टुडे इज फर्स्ट डे going. So what happens that this environment has to be maintained. अगर ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, डिजीज स्टेट हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा. So you know you are taking daily your their intake in the form of food, the liquid components you are taking, and there are outputs, isn't it? So this has to be maintained. इतना इनपुट आ रहा है, आउटपुट होना चाहिए, तो बॉडी मेंटेन रहे, है ना. इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ऊपर नीचे होगा. सो यू नो इनटेक यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर और फूड स्टफ, अप्रोक्सीमेटली 2300 ml, 2300 in the form of water you are taking, 2300 approximately, and this is excreted out. This is taken in the form of liquid or food. Food is also having some water, amount of water, and in the form of metabolism also. No, food लेते हैं तो metabolism होता है, उसमें water निकलता है ना, isn't it? So, and the output is in the form of, you know, it excrete out through kidneys, renal area, urine, and through the fecal matter, and also through the sweating, isn't it? And there are non-sensible loss also, है ना, जो मॉनिट लॉसेज होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन से भी हम करते हैं, इनसेंसिबल लॉस करते हैं, वाटर लॉस होते हैं. अप्रोक्सीमेटली यू नो किडनी से कितना हमारा लॉस होता है, यूरिन से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर. इट में वैरी हाफ लीटर टू 20 लीटर डिपेंडिंग अपॉन अगर आप किस कंडीशन में. अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा आएगा. तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज इज 1.5 लीटर पर डे. एंड थ्रू द लंग्स दिस इज इनसेंसिबल लॉस. लंग से इंसेंसिबल लॉस अप्रोक्सीमेटली 400 ml होते हैं पर डे, 350 to 400 ml. एंड थ्रू द फीकल मैटर, फीकल मैटर से कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 ml, अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ऑल्सो. देन स्वेटिंग, स्वेटिंग से भी होता है लॉस, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर तक हो जाता है. अगर ज्यादा आप करोगे एक्सरसाइज तो ज्यादा होगा, है ना, एक्सरसाइज इंडिविजुअल. देन देयर इज स्किन, स्किन से भी इंसेंसिबल लॉस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 300. सो दिस कम्स, अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 2200 ये भी आ जाता है. ठीक है. सो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, सो द होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड, एंड देयर lymphatic connections is in between the interstitial fluid and the plasma. ये हम देखेंगे आगे. देन देयर आर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपोनेंट कंपार्टमेंट, उसी को वहां पर लिख रहे हैं. यू नो दिस इज 40% of the total body weight, 28 liter. Each cell contain individual mixture of different constituents obviously, है ना. ICF और ECF का environment सिमिलर तो नहीं होता, है ना.
सब्सटेंसेस अलग अलग होते हैं अंदर में, इलेक्ट्रोलाइट्स, ईच सेल कंटेन इंडिविजुअल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन आईसीएफ इन्वायरमेंट जो डिफरेंट सेल्स का होता है यूजुअली सेम होता है, एक सेल है दूसरा सेल है, उसका आईसीएफ इन्वायरमेंट लगभग सेम होता है ना, ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, composition is remarkably similar even to the animal cells also, ICF environment. Then extracellular environment, we have all discussed this thing, blood plasma, है ना, 4 compartments में ECF को divide करा था, blood plasma, interstitial fluid, transcellular fluid, then mesenchymal fluid. Is it clear now everyone? Plasma, same thing which we have discussed there. 5%, 25% of the ECF 5 liter आ रहा है, on average out of 5 liter, total volume 3.5, 5 liter total जो blood volume होता है हमारा 3.5 liter is plasma alone, others are the formed elements. So the interstitial fluid, there are other fluids like transcellular fluid मिलते हैं, वो क्या होते हैं, जो different areas होते हैं हमारे, वो secretory cells वो secrete करते हैं, like you know there are cerebrospinal fluid, that is called transcellular fluid, like synovial fluid, यहाँ पे होते हैं joints पे होते हैं synovial fluid. Then there are pericardial fluid, वो friction को रोकने के लिए होते हैं, है ना, एक दूसरे से surface वो damage नहीं करे उसके लिए. Then there are pleural fluid also, okay, though there are very little amount, only 1.5% of body weight, approximately 1 liter. Examples are cerebrospinal fluid, there are intraocular fluid, you know, aqueous humor, vitreous humor, these are also transcellular fluid. Then there are digestive juices, pancreas से आते हैं, gastric juice से आते हैं, those are all transcellular fluid. Then there are mesenchymal fluid, ये कहाँ पे होते हैं, like connective tissue, cartilage, bones, bones के within अंदर में होते हैं ये. Dense connective tissue, cartilage, bones contain about 6% of the body water only, body water का 6%. Then another important concept we all must know, that is the movement of the fluid between the plasma, ये बता दें plasma और interstitial fluid, ये movement हो रहे थे आपस में ना, ECF में जो आपका interstitial compartment था और प्लाज्मा था, दे आर इन रैंडम, दे आर इन क्या करते हैं, एक दूसरे से सब्सटेंसेस को मूव करते, एंड द मूवमेंट ऑफ दो सब्सटेंसेस बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज गवर्न्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस. ऐसे नहीं कि अपने आप हो रहा, इट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन फोर्सेस, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड स्टार्लिंग फोर्सेस. यू मस्ट हैव नो, यू नो, एनीवन नोज अबाउट स्टार्लिंग फोर्सेस? नहीं. So this is an important concept everyone must understand. And the exchange between the water, the exchange of water between the interstitial fluid or intracellular fluid. तो interstitial fluid था और intracellular fluid ICF environment, इसमें जो exchange हो रहा है यहाँ पे भी exchange होता है, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं होता, it is not tight. So it is also exchange, and these are governed by osmotic forces. No, osmotically active substances उस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ECF इन्वायरमेंट. ECF इन्वायरमेंट में नीड होता है तो ICF इन्वायरमेंट से शिफ्ट होता है. So these are the Starling forces at the capillary, and you know Starling forces at the capillary, there are in each, across the membrane, each capillary membrane, across the membrane there are 4 forces which are acting. Starling forces जो होते हैं 2 within and 2 outside. You see capillary network, this is the arterial end, you know, arteries क्या breakdown होकर arterioles बनते हैं, arterioles से meta arterioles, then there are formation of capillaries, and the capillaries are the sites where exchange occurs. और दूसरे साइड में क्या होता है, फिर ज्वाइनों को वेन्यूल्स और वेन्स बन जाते, isn't it? So at the site of capillary, suppose this is the capillary area, their exchange occurs, and this exchange occurs in response to these Starling forces. And these Starling forces, 2 within and 2 outside. ये membrane है, सेल के अंदर में
इसके अंदर में फोर्सेस काम करेंगे और बाहर में भी कुछ, दीज आर द इंटरस्टिशियल स्पेस एरिया, है ना, सेल के बाहर का एरिया है, दूसरे सेल के बीच का, दो सेल के बीच का जो एरिया, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इधर भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं, माइन्यूट अमाउंट, दो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी फोर्स काम करते हैं, इधर भी फोर्स करते हैं, एंड देयर आर फोर्सेस which are pushing, which are favoring filtration, and there are forces which are working against the filtration, है ना। तो फोर्सेस कुछ करते हैं जो बाहर की तरफ फेवर करते हैं फिल्ट्रेशन को, और कुछ क्या करते हैं, फेवर नहीं करते या रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो व्हाट आर द फोर्सेस which are favoring filtration? If anyone can tell? Yes, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस साइड का, इधर का या इधर का, दोनों साइड में फ्लूइड है, आउटसाइड, नो, देयर आर टू फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड देयर आर ऑन्कोटिक फोर्स, है ना, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करते हैं, पुल करते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट्स के चलते होते हैं वो। तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करेगा, पुल करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश करता है। ओके, तो यहाँ पे ब्लड है अंदर में, तो ब्लड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज आल्सो देयर फ्लूइड कंपार्टमेंट आल्सो, so that will be pushing outside, and there are solid particles also in the form of plasma proteins that will be pulling the fluid, that tries to pull the fluid. So net effect will decide whether it will filter or not, net effect जो होगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, this is called colloidal oncotic pressure, है ना। यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, 37 मिलीमीटर मर्क्यूरी, 37 एट द आर्टीरियल एंड। कैपिलरी में आर्टीरियल एंड है, वेनस एंड है। तो कैपिलरी में क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज 37 मिलीमीटर मर्क्यूरी, एंड एट द वेनस एंड इट ड्रॉप्स डाउन टू 17 मिलीमीटर मर्क्यूरी, क्योंकि फिल्टर हो गया, है ना। एंड ऑन्कोटिक प्रेशर इज सेम ऑन बोथ द साइड, 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड देयर इज 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी, सेम है दोनों साइड में, कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर इज सेम, ठीक है। सो नेट इफेक्ट किधर होगा, 37 इधर है, 25, नेट इफेक्ट किधर जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। बट देयर आर फोर्सेस आल्सो, यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड है, वो भी फोर्सेस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी माइन्यूट अमाउंट में फ्लूइड है, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो पुशिंग एंड पुलिंग। यहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल oncotic pressure, interstitial fluid hydrostatic pressure। interstitial fluid oncotic pressure जो होता है, oncotic मीन्स इधर पुल करने वाला, दैट इज +3। तो ये +3 किससे ऐड हो जाएगा, जो पुश कर रहा था इधर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इस साइड में फेवर कर रहा है, oncotic प्रेशर भी पुल कर रहा है, दोनों सेम साइड में हो गया ना। तो 37 और +3 दैट इज क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल oncotic प्रेशर 40 हो गया, isn't it? एंड अगेंस्ट कितना काम कर रहे हैं, 25, है ना, तो वो माइनस कर देंगे। इधर इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज -2, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, -2, तो ये दोनों ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो नेट इफेक्ट इज बाहर की तरफ फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। एंड रिवर्स टू दैट, यहाँ पे भी उसी तरह फोर्स हम निकालेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होंगे वो क्या करेंगे, इधर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर करेंगे, ऑन्कोटिक प्रेशर पुल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 17 है, एंड दिस इज कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर इज 25, सेम। तो किधर होगा नेट फोर्स, इनसाइड, इजंट इट। ये दोनों तो ऑलमोस्ट निगेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इधर ये क्या कर रहे हैं, रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो बट व्हाट हैपेंस दैट फिल्ट्रेशन का जो फोर्स होता है a little bit more than the reabsorption force, so there is a gap of 2 to 3 millimeter mercury। तो क्या होगा, नेट इफेक्ट, थोड़े बहुत फ्लूइड यहाँ पे रहते हैं इसलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में, लेकिन जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है यहाँ पे, लेफ्ट ओवर फ्लूइड इज टेकन अप बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ले लेते हैं उसको, ठीक है। So these are the forces which are acting, and these forces, maintenance of these forces determine whether any extra fluid will accumulate here or not,
एक्स्ट्रा फ्लूइड जब एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड, इसको क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं, isn't it? So if there is imbalance of these forces, the edema will result. इस तरह का पिक्चर आता है, हाँ, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? पिट बन जाएगी, है ना? पिटिंग एडिमा कहते हैं. There are different types of edema, you will learn later. Pitting edema and non-pitting edema, है ना? This is an example of fluid जमा हो रहा है, that is pitting edema. अगर फैट ज्यादा जमा हो जाए तो उसको नॉन पिटिंग कहते हैं. इसमें होता है नॉन पिटिंग एडिमा, एलिफेंटियासिस. वेरी गुड. That's all for today.